Gopichand sir also the co-host and also unmute him. Meanwhile, I'll give. So, welcome everyone. Welcome to the webinar on pre-monsoon dry sowing. प्री-मॉनसून ड्राई सोइंग एक तकनीक, एक प्रक्रिया है मिट्टी को बेहतर बनाने की, मिट्टी को अच्छी बनाने की। और ये प्रक्रिया आरवाईएसएस, जो कि एक सरकारी संस्था है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, एपीसीएनएफ द्वारा पिछले कई सालों से इसका काम चलता आ रहा है। उनके खुद के पर्सनल अनुभव रहे हैं कई सारे अनेकों ट्रायल पे। तो आज जो हम लोग सब लोग मिले हैं, वो हमें ये भी पता है कि सीजनल वेरिएशंस बहुत एविडेंट हो गए हैं आज के समय में। बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस, स्ट्रेस, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। उन चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे प्री मॉनसून ड्राई सोइंग इस वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों के लिए मददगार हो सकती है, ये उद्देश्य है इसको समझने का, इस तकनीक को समझने का। आज जो भी लोग जुड़े हैं वो अलग अलग राज्यों से, जो एनसीएनएफ के स्टेट पार्टनर्स हैं, वहां से लोग यहाँ पर इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। उसके बियॉन्ड भी कुछ अलग नेटवर्क से भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं, उनका इस वेबिनार का एक उद्देश्य ये भी है कि आज आप अपनी एक समझ बनाएं। एक समझ, जब गोपीनाथ सर और प्रकाश सर एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ बात कर रहे होंगे, और जब ये सेशन कंप्लीट हो रहा होगा, तो अगर आपके राज्यों में आपके किसानों के साथ में आप इस ट्रायल को करने में इच्छुक हैं, तो आप अपने राज्य के एनसीएनएफ के स्टेट फैसिलिटेटर से संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी टाइमलाइन, समय खरीफ से पहले का कम बचा हुआ है, तो इसको ज्यादा डिले नहीं करना है। आज का वेबिनार हो जाने के बाद में हम तुरंत अपने स्टेट से संपर्क करें। इसी वेबसाइट, ये इसी जूम में अपना नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकते हैं। So Murli sir, this is a brief that we have all the people from different states who are somewhere part of the NCNF state chapters. They have come, and the intention is to understand PMDS slightly deeper, and how do they incorporate these as a trial in their work back in their areas. So in crisp, that's an idea. Now, sir, I would invite you to please give a brief नो नो, introduction to. आई विल नॉट टेक, मैं बहुत सारा समय नहीं लूंगा। मेरा 1-2 मिनट में जी 1-2 शब्दों में बोलूंगा। बाद में गोपी साहब और प्रकाश आपको विस्तार से बताएंगे प्री मानसून ड्राई सोइंग क्या है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि खेती करने वाले लोग सूरज और सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स है, तो उसकी सहायता करने वाले हम हैं। अगर ये बात समझ में आ जाता है तो धरती को, खेत को पूरी तरह कवर करके रखना होगा। पूरी तरह कवर कर रखना होगा, पूरी साल कवर करके रखना होगा। पूरी साल कवर करना का मतलब, अगर जून में जुलाई में बरसात होती है, तो अप्रैल से मार्च से खेत खाली खाली रह सकता है। उसको खाली नहीं रखना है, उसको खाली नहीं रखना है। और एक तरह का के फसल से, एक तरह का क्रॉप से उसको नहीं भर सकते हैं। तरह तरह का खेत को, सीड्स को रख के यू नीड टू सो देम ऑन दी लैंड। तो दिस मेथड इज कॉल्ड प्री मानसून ड्राई सोइंग। उसके बाद खरीफ के बाद भी रबी के बीच में अगर अंतर होता है, तो उस समय में भी खेत में कवर करके रखना होगा। और रबी के बाद फिर प्री मानसून, खरीफ की पहले की प्री मानसून ड्राई सोइंग होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। दिस इज ए बेसिक आइडिया। इससे क्या होता है कि देयर आर 2-3 क्लियर बेनिफिट्स हमें मिला है। एक मिला है नीड फॉर सॉइल कवर रहेगा, और दूसरा माइक्रोब्स को खाना मिलता रहेगा। जब जब माइक्रोब्स को खाना मिलता रहे, तो माइक्रोब्स एक्टिव रहेंगे, दैट इज गुड फॉर अस। तीसरा, whatever production that happens, we may harvest. एंड दूसरा, इफ यू आर नॉट एबल टू हार्वेस्ट, छोटा होता है, ग्रास तरह होता है, तो साइल के अंदर
जा सकता है। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग आइडिया। और उसके आधार से हमें समझ में आया है कि हमका खाद्य का उपयोग बहुत कम हो सकता है। पीएमडीएस अगर है तो खाद्य का उपयोग कम हो सकता है। हमें लगता है ये बात सब लोग टेस्ट करके एक समझ पे आ सकते हैं। बट आधा खाद्य उपयोग कम हो सकता है, कम से कम आधा। और खरीफ में जब पूरी क्रॉप डायमेट्री होती है तो रिमेनिंग आधा ऑल्सो कम हो जाएगा। तो आधा कम होने का संभावना है। तो इसके मतलब न्यूट्रिएंट्स की जनरेशन न्यूट्रिएंट्स की जनरेशन वो फोटो सिंथेसिस के द्वारा हार्वेस्टिंग होके साइल को साइल में अवेलेबल होगा। दिस इज ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इसलिए पीएमडीएस करना होगा। और इसकी शो करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अगर साइल टाइट है, ये नॉर्मल सोइंग मेथड विल नॉट वर्क। इसीलिए थोड़ा अलग से करना होगा। हमारे लोग गोपी और प्रकाश और विस्तार से कहेंगे, बताएंगे ये कैसे करना है। प्लेटाइज करना होगा, सोई साइल में दबा के रखना होगा। उसके बाद जब थोड़ा मानसून 2 2 mm 3 mm 5 mm हो जाता है, वो फसल निकल के आ सकता है। So that is an idea, and this whole idea is tested. Now more than 300,000, 400,000 families are doing it already in Andhra Pradesh. A, not a totally new idea, tested in our place for last 3 4 years. It seems to be working. आई लीव दिस थॉट इन योर माइंड्स। अब ये बात छोड़ के मैं जाऊंगा। बट आप ट्राई कीजिए। और ये पीएम नेचुरल फार्मिंग के अंदर, एग्रो इकोलॉजी के अंदर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ये होगा, खेत को तरह तरह के फसलों से भरा रखना है। फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स फ्रॉम फरवरी मार्च अप्रैल से ही, बिना बरसात के आने से पहले ही रखना होगा। उसके बाद हार्वेस्ट करके दूसरी फसल को रख सकते हैं। तो दैट इज एन आइडिया। दिस सीम्स टू वर्क। अपने अपने एरिया के अनुसार ये डाइवर्सिटी, लोकल डाइवर्सिटी आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। ये 10 फसल, 15 फसल और 20 फसल कितना रखना है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने खेत की तरह टाइप से और वेदर की टाइप सिचुएशन से और पानी की अवेलेबिलिटी के सिचुएशन से देख के ये करना होगा। बट दैट इज ए मोर ऑफ लोकल कस्टमाइजेशन। आई लीव इट एट दैट। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी वुड लाइक टू लिसन टू यू आफ्टर 3 महीने के बाद, जुलाई में, अगस्त में, जब पीएमडीएस करने के बाद जो अनुभव होगा वो हम दूसरे लोगों को, ज़्यादा लोगों को लेकर जा सकते हैं। भारत में पीएमडीएस बिना खेत नहीं रह सकता है। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द विजन वी आर गोइंग टू हैव। ये सपना हमारा है, पूरी भारत में सब खेतों में करीब से पहले ही खेत को फसल से भर के रखना होगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रकाश। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक Yeah. यू। गोपी सर, मे वी कैन, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन अपनी। Yes. Hello. यस May सर। you please say whether I'm audible, sir, Manas? यस 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 सर, यू आर ऑडिबल। Thank you. Thank you. Initially, I would like to thank Prakash sir and Mr. Murli sir. Murli sir basically gave the broad gist. Prior to that, please let me apologize. I'm not that fluent in Hindi and I can even not speak much to the satisfaction of the people seeing it live stream and participating over Zoom. I hope English would be better. Uh, because सर, Hindi सो I can't, to be frank. ओके, सो मे बी आपको आपको देन गोपी, यू नीड टू डू speak for half a minute or something and give Manas
और somebody will take it tell it in Hindi, ऐसा कुछ करना होगा आपको। Right. Yes, बिल्कुल। That yes, would be yes. better, sir. Yeah. Because to be very frank, I can't do justice in Hindi to a subject like this. Sure, sir, I'll sure, agree sure. with you. Yeah. Sir, Gopi sir, as per my knowledge, you are capable, sir. You go ahead with your No, English, sir. no, That is more than no, that Prakash. is more than No, enough. No, Prakash. no, no, no. You We please, you can't please. risk the time of all the people. We can't risk the time of all the people in the call, right? No, 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 You no. Please, I have please, Manas. seen speak now. for I 1 have seen. minute, then Manas will say it in Hindi. Then you Yes. continue Yes. like that. That's a good way, Gopi. Yeah. Yes, sir. Yeah, Thank you, sir. Otherwise, you Thank you. for yeah, just yeah, not. Yeah. yeah, yeah. Yeah. Basically, actually, my name is K. Gopichan. I am from the Department of Agriculture. One short introduction. I have been in the project for the past 7 years. The last first of April to 2024, I completed complete 7 years in the project. And right now, I'm part of the transformation team. I am recently redesignated as senior thematic lead, and I'm taking care of the transformation part of this natural farming project in RVSS AP. I'll broadly present about PMDS, what we are doing in AP, our experiences. As already informed by Murali sir, I would just make all the points in English, and maybe Manas can take over. I'll be pausing in between so that you Yes, sir. can directly get them translated into Hindi for the understanding of all the people in the call. Sure, sir. So you can start, and maybe in small breaks, I can translate. Yeah. My screen is visible, right? Yes, yes. Thank you so much. So basically, this pre-monsoon dry sowing is one major important critical facet of natural farming. It's called pre-monsoon dry sowing. As part of that, broadly, I will talk about natural farming. Natural farming is generally, most of you are already aware, you already conducted a series of visits and all to different clusters of AP. And PMDS also you might have seen in the field. Having said that, I'll just take you through very broadly on natural farming. Natural farming is nothing but it's a solution, as Manasji also very clearly pointed out. This is one solution for all the different emergencies facing the planet right now. And it is a sort of entirely, the nature is mimicked in this. In natural farming, we try to mimic nature. And two lines, they are a bit complicated, but that says everything of natural farming. It's a complete holistic land management practice which solidly leverages the power of photosynthesis in plants, thereby closing the carbon cycle, and also parallelly paving way for building the soil health, the soil fertility, soil nutritive values, and all, and thereby ensures the resilience of the crops, and ultimately it will accrue towards production of nutrient dense foods. Yes, sir, Manas ji. जी सर. सो एक ब्रीफ पहले सर का इंट्रोडक्शन. सर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से पिछले 7 साल से जुड़े रहे हैं, और अभी जो RYSS APCNF की जो ट्रांसफॉर्मेशन टीम है उसका हिस्सा है, और जो नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का जो प्रोजेक्ट है उसको वो लीड कर रहे हैं, उसके थीमेटिक को वो लीड कर रहे हैं. PMDS के बारे में अभी जो पहली स्लाइड है उसमें सर ने ये बताया है कि प्राकृतिक खेती क्या है. तो प्राकृतिक खेती के सिद्धांत में उन्होंने पहली चीज ये बोली, ऐसी खेती जो प्रकृति को कॉपी करने की कोशिश करे, जो प्रकृति के सिस्टम्स हैं, जो प्रकृति की साइकिल हैं, जो प्रकृति में अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, उससे सबसे ज्यादा करीबी जो प्राकृतिक खेती का तंत्र है वो प्राकृतिक खेती है. दूसरा उसमें उन्होंने बात की है, जो दूसरा पॉइंट की बात हो रही है कि जहां पर एक समग्र रूप से, एक होलिस्टिक रूप से अलग अलग पहलुओं पे, मिट्टी की, मृदा की न्यूट्रिशन पे, या जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, उसके माध्यम से आप मिट्टी को कैसे बेहतर करें, उसकी मजबूती कैसे मेंश्योर करें, और कैसे पेड़ पौधों में न्यूट्रिशंस परस्पर मिलता रहे, वो जो खेती है उसको प्राकृतिक खेती बोलते हैं. सर. Thank you. But having said that, there are 9 universal principles of natural farming. All of our protocols and practices in natural farming
Initially, they were relying on entirely the polycar mode. Initially, we had the polycar mode of promotion of natural farming, the main wheels of NF, like Jivamrut, Bijamrut, Jivamrut, and Achadan, and also Vapsa. But slowly, as we learn from the farmers, as we learn from the international community, as we learn from this concept growing globally on agroecology and all, we graduated towards 9 universal principles. The 9 universal principles we are promoting right now as part of natural farming are already listed over here. The thing is, the soil is to be covered. Already it has been explained in a nutshell by Mr. Murali sir previously. The soil is to be covered with 3 square days. It's a core important principle. By the way, all these nine, this seriatim is to be followed. We are promoting the knowledge on these principles. We are ensuring that they follow the same order. They are 9 in number. Soil is to be covered with crops 3 square days. That's a living root. We need to have a living root to ensure the propagation of the different beneficial microbial organisms. Next, we must ensure there must be crop diversity. There must at least be, along with the main crop, 15 to 20 crops. We should also include trees. The third one is we need to keep the soil covered with either living crop residues, or wherever there is no possibility of having living plants, where they are not there, we must have other sorts of residues. Next, there must be very, very minimal disturbance of soils. We need to minimize tillage. We need to minimize tillage. As the first principle says, we need to keep the crop covered with 3 square days, with the soil to be covered with 3 square days, crops. The minimal disturbance of soils is one important principle which aids that, which is part of that, which promotes that. And we are also, for the farmers, in asking them to go for their own seeds. Their own seeds only have to be multiplied. Their own indigenous seeds are to be preferred. And we also talk of integrating animals into farming. This is also there, already being practiced from our forefathers' times only. All animals are basically an integral part of farming. They are part of natural farming. And then comes the important principle of biostimulants. The Jivamrut, Bijamrut, and all these are all very important, critical APCNF inputs prepared from the cow raw materials, and they act as biostimulants. They trigger the soil biology by influencing the key critical microbial organisms. They ensure that their catalytical role is activated by these biostimulants. That is another important principle. Then we ensure that all pest and disease management, to the extent possible, completely must be done through better agronomical practices and botanical extracts. And the most important is we never encourage the use of synthetic fertilizers, pesticides, herbicides in the entire cycle of natural farming. Yes, sir. Yeah. So, ये जो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग में पीएमडीएस अभी है, उससे पहले जहां से शुरुआत हुई थी, जब सुभाष पालेकर जी का कई सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, तो उनके कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा, ये जो मुख्य मुख्य तौर पे वहां से इसकी मतलब वहां से ये प्रक्रिया चालू हुई। उसके बाद में कई सारा शोध, कई सारा रिसर्च, कई सारे और एक्सपर्ट से मिलने के बाद में एपीसीएनएफ बॉइल डाउन उनके कुछ 9 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत की जो बात कर रहे हैं वो है सॉइल टू बी कवर्ड विथ क्रॉप्स 365 डेज, लिविंग रूट प्रिंसिपल। मतलब आपकी जमीन हमेशा ढकी रहनी चाहिए किसी ना किसी तरीके की फसलों से। 365 दिन कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहना चाहिए, या अगर लगा नहीं है तो उसके अंदर जो रूट्स हैं, जो बचे हुए रूट्स हैं, वो जिंदा हो। ऐसा सिस्टम जहां पर रूट्स मर ना जाए, तो लिविंग रूट्स का प्रिंसिपल की बात हो रही है, पहला। दूसरा है डाइवर्स क्रॉप, 15 से 20 क्रॉप इंक्लूडिंग ट्रीज, काफी सारे मिली जुली प्रकार के, वो अपने दलहन, तिलहन, अनाज, मोटा अनाज, मसाले, जो भी चीजें हैं, हल्दी, ये वो, उसके साथ में पेड़, ये कैसे हो सकता है उस खेत में, ये दूसरा प्रिंसिपल की बात हो रही है। तीसरी प्रिंसिपल की बात है कीप सॉइल कवर्ड विद क्रॉप रेसिड्यूज। फसल हो जाने के बाद में जो बचता है उसको कैसे मिट्टी में ही रखें, जिससे उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकल के आ रहे हैं वो मिट्टी में वापस से जाएं। तो
बचे हुए माल को, जिसको बहुत सारी जगह जला दिया जाता है या बहुत सारी जगह हटा दिया जाता है, वो कैसे वहां पर रहे, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। मिनिमल डिस्टरबेंस ऑफ सॉइल, कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब करना है, ना ही गहरी जुताई करनी है, बहुत ज्यादा गहरी जुताई नहीं करनी है, और अगर जरूरत लगे तो बहुत हल्की, चाहे वो बैल से हो चाहे वो सिंपल किसी और साइकिल व्हील से हो, लेकिन बहुत हल्की जुताई की बात की जा रही है, क्योंकि ज्यादा जोतने से जो नीचे की मिट्टी का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। खुद के बीज एक और अहम पहलू है इसका। जानवरों को, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब जानवर कैसे खेती में इंटीग्रेट हो, कैसे जुड़े, वो एक पहलू है। फिर बायो स्टिमुलेंट्स, अपने जीवामृत, बीजामृत, जो इस तरह के कल्चर जो उसमें अलग अलग तरीके की माइक्रोब्स की पॉसिबिलिटी हमारी मिट्टी को देते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पेस्ट मैनेजमेंट थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड बोटानिकल पेस्टिसाइड्स, तो जो अपन दवाई, अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, ये सारी चीजें बनाते हैं, बट उसके साथ में और भी तरीके हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉप्स हो चाहे वो ट्रैप क्रॉप्स हो, वो भी कैसे इसका हिस्सा बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बीजीसाइड एकदम मना है इन 9 प्रिंसिपल्स पे, जो कि एपीसीएनएफ फॉलो करता आ रहा है। थैंक यू सर। या Thank you, sir. And having said that, pre-monsoon dry sowing is one important critical paradigm which facilitates the prime principle of keeping the soil covered with living roots 3 days a year. By pre-monsoon dry sowing, what we mean, it's a process of generally mix of seeds. It's a process of sowing a mix of seeds. We have showed you in this slide one person called Vishnuvardhan Reddy. He's our natural farming fellow. RVSS had a practice of taking young graduates in agri, horticulture, and different other areas of science, and they get immersed for a period of a month in these areas, and then they are observed into the project as natural farming fellows. Mr. Vishwanath Reddy is one natural farming fellow under the able guidance of our DPM Anantapur, and also the guidance of our executive vice chairman. And this person has initiated certain experiments in May 2018. That's around total 5-6 years back. They had initiated certain experiments over there, and through that we had started the process of popularizing pre-monsoon dry sowing. These were the initial days where they did a lot of experimentation, and the initial breakthrough has come from this chronic drought-prone area, complete semi-arid area of Anantapur district. By PMDS, we mean it's a process of sowing a mix of seeds. Mix of seeds, when we say mix of seeds, there are initially we had around 4-5 kinds of things. From that, we translate into Navadanya, 9. And right now, we're talking about 30-35 kinds of different crop seeds, which are sown during off season. When I say off season, it is no way connected with the monsoon showers. Most of the larger seeds, we also pelletize them. Murli sir also touched these things initially. We have a process of pelletization, which I'll explain as we follow the course of these slides. And these seeds are mixed together. They're treated with bijamrut, and then they're sown. Generally, in AP, we have a habit of a crop of Kharif and a crop of Rabi. Generally, it's a 2-crop season all over. Generally, the Kharif coincides with the onset of monsoon, and Rabi is generally a crop followed after Kharif, where there is assured source of irrigation, maybe bore, maybe canal, or any other maybe drip or any other alternate source of irrigation. A crop under Rabi is raised. But generally, Kharif is the major season all over in AP, with very select areas under Rabi. And under pre-monsoon dry sowing, it's a technique of growing these different crop seeds during off-season, before the incidence of rains in the rainy season, to keep the land covered with these living roots. Yes, sir. या सो प्री मॉनसून ड्राइंग सोइंग की जो प्रक्रिया है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, कम से कम 20 से 15, 20, 30 जो भी आपके पास में अलग अलग तरीके के बीज उपलब्ध हैं, उनका मिक्स बना करके उनको मेन फसल लगाने से पहले अपनी जमीन में डालना।
एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर्टिकुलर पिक्चर में जो व्यक्ति आपको देख रहे हैं, ये विष्णुवर्धन रेड्डी जी हैं। ये जब नेचुरल फार्मिंग फेलो की शुरुआत हुई थी, वहाँ के फेलोज में से एक हैं, और इन्होंने काफी सारा एक्सपेरिमेंट ऐसे एरिया में किया है जहां पर जो सबसे ड्राई अनंतपुर का हिस्सा है, जहां पर सूखा मतलब सूखा काफी समय से रहता ही है और सबसे ड्राइएस्ट रीजन है। तो वहां पर इसके रिजल्ट्स को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कि वहां पर ऐसे लैंड में जहां पर पानी की कमी है, जहां मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजेस, वहां पर इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो स्पेशली खरीफ की बात हो रही है, कि खरीफ की मुख्य फसल लगाने से पहले आपको जो समय मिल रहा है, उसमें 20 से 30 प्रकार की अलग अलग तरीके के बीजों को अपनी मिट्टी में डालना और उनको बढ़ाने के लिए रखना, ये एक प्रक्रिया है। आगे सर बताएंगे और इसको डिटेल में कैसे जाते हैं। Thank you, Ji. Generally, for PMDS, we have got several avenues under PMDS. The main broad window for PMDS is, as I was saying initially, prior to the incidence of monsoon showers. That is in the summer months. In the summer months, that's pre-monsoon sowing in the months of summer. Generally, apart from this pre-monsoon dry sowing, we have got paddy is one main crop in AP. We got paddy. It's completely under adequate source of irrigation. Then we've got ID crops, completely dry crops under rain-fed conditions, where they are completely dependent on the incidence of rainfall. So pre-monsoon dry sowing prior to the incidence of rainfall is possible in both the venues prior to Kharif crop. Apart from this, there are other instances wherein the main crop has been sown, the pre-monsoon dry sowing hasn't happened, but still there is a capability of ensuring intercropping, polycropping, mixed cropping in the already existing standing crop prior to the basic intercultivation. We have also evolved certain protocols, certain methods of ensuring that the standing crop, the standing monocrop also gets converted to a polycropping mode. That is the second mode of intervention for pre-monsoon dry sowing. After the completion of Kharif, as I was telling you initially, 70-80% of the area has only Kharif, or the cropped area in AP has got only Kharif. The Rabi area is limited. So Kharif followed by another process of sowing these seeds in a pelletized manner is Rabi dry sowing, where there is no significant season of Rabi, where there is no assured source of irrigation for the second crop. And there are also instances where in between Kharif and Rabi, say for instance, Kharif crop of paddy is there, Rabi of paddy or maize is there. In between also, there is a significant sowing window which is available, wherein this Rabi dry sowing also can be undertaken. So these are the major avenues possible for pre-monsoon dry sowing and Rabi dry sowing. The basic intention of all this is to ensure that the soil is not kept barren in the harsh summer months. It is kept covered with crops with a living root, so as to sustain the soil related positive attributes are intact. Yes, sir. सो सर एक प्रश्न आया था, आईडी क्रॉप्स क्या होती हैं, वो एक आप बता दीजिए, फिर मैं। ID crops are nothing but completely incidents on they're dependent on rains. रेन They're फेड called क्रॉप्स कंप्लीटली। yeah. ओके। Yes, sir. Rain-fed तो crops. ओके। तो इसमें जो अपनी खरीफ की बात हो रही है, उसमें अप्रैल टू अक्टूबर का जो समय सीमा है, उसमें दो तरीके के हैं। जहां पर जैसे आंध्र प्रदेश में पैडी वाला, धान वाला रीजन है, तो खरीफ से पहले ऐसे रीजन में जहां पानी की उपलब्धता है, और जहां ऐसे भी रीजन जहां पर पानी की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है, वो वर्षा आधारित खेती पे निर्भर है। एक तो सर ने ये बताया, दूसरा बताया कि जहां पर आपका मुख्य फसल लग भी गया है, वहां पर भी कुछ और फसलों को पॉलीक्रॉप की तरह इंक्लूड करना इस माध्यम के से संभव है। फिर दूसरा रबी में बताया है, रबी में ड्राई पीरियड्स में जब है, तो उसमें भी ये ट्रायल्स किए जा सकते हैं, जिसमें हम नवंबर से मार्च के बीच में ऐसी फसलें लगाएं जिससे ग्राउंड हमारा कवर रहे। सर। Yes, sir. And actually here we are happy that we have been technically enriched by the services of one Dr. Walter Ena, a soil microbiologist from Australia.
Luckily, our executive vice chairman ji had some good contacts with him over for several physical sessions and meetings. And with his technical guidance and his technical inputs, our activity in Anantapuram got further strengthened, and the learnings over there got successfully interpreted all over the other districts in AP. So these are certain glimpses of his visits. As I was telling you, the concept started in May of in 2018, and Hmm. luckily we had the privilege of the visit of Dr. Walter Ina in November 2019. He has visited there. He has spent a few days over there, understood the crops, talked to our people there, talked to the farmers. He has very patiently listened to their experiences and understood the science behind the entire thing. And based on his inputs, we could fine tune our strategies and start the process of effective implementation in different other areas. ओके। तो Yes, sir. सर यहाँ पर एक साइंटिस्ट वॉल्टर जेना है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और सॉइल माइक्रोबियोलॉजिस्ट हैं। उनकी मदद से एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके जो रिजल्ट आए उसको और डिस्ट्रिक्ट में आगे ले जाने में मदद मिली। तो ये एक अनुभव सर ने शेयर किया। सर, देयर आर क्वेश्चंस दैट पीपल आर राइटिंग, डू यू वांट टू टेक इट एट द एंड और शुड वी कीप टेकिंग इन बिटवीन? व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू? The way which is comfortable to you, no issue, sir. We can have the end, preferably. Okay, then let's do it at the end. Let's do it Fine, at the end. fine. Yeah, Yes, yeah. yes. I think it would be better if somebody makes note of them so that we don't miss them. Yes, yes, yes. Yeah, sir. One of our team members will do it. Yeah. Right. Here I had given a broad numbers of what we have achieved. As I explained initially, 2018 was the year we did that pilot and all through the help of Vishnuvardhan Reddy. In 1920, slowly the concept started percolating to different other districts. And now, over a period of time, over a period of these 4-5 years, we are at close to close to 9 lakh farmers practicing PMDS in around 9.34 lakh acres. This is where we are. तो ये एक बेसिकली जब 2018 से ये यात्रा पीएमडीएस को लेकर के चालू हुई आंध्र प्रदेश में, वो कुछ मतलब इतने 28,000 फार्मर से स्टार्ट हुई थी और आज के करीब हमारे पास में 90,000 फार्मर के करीब हैं जो पीएमडीएस अपनी लैंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कम से कम 5-6 साल का अनुभव इस टेक्निक के अंदर गया है, इसको एक्सपेरिमेंट और इसके रिजल्ट्स को देखने के लिए। Yes, sir. Yeah, PMDS is actually the process where we prepare the entire land preparation. The plowings are done, and we have we sow a diverse range of crops to maintain soil health, and we incorporate enough practices to enhance soil fertility. Actually, the usage of crop residues are also used extensively. They also provide they also serve as an important source of nutrients to the crops. And we also employ other methods for crop rotation, land management, and we also do seed pelletization. Here we are talking about the different kinds of seeds. Initially, the number of seeds we have been using is only very, very minimal, say 3, 4, 5 kinds of seeds. And that had graduated to around 9 complete Navadanya mode. From Navadanya, we had gone to around 12 to 15. And right now, we have got certain districts where we have gone even to 32 plus, 30 plus kind of seed mix also. When we say seed mix, we are very particular that the different categories, different crop categories are adequately covered in this crop seed mix based on the specific agroecological situations of the different zones of the AP, based on what kind of seed germinates there, what kind of soils are there, what sort of irrigation facilities are there, when is the likely incidence of rain, based on their previous experiences. All our district project managers, they are the leaders of the implementation in their respective districts. They have standardized certain standard seed mixes in their particular districts. Generally, when I talk of crop categories, I have just listed down the categories towards the right. We've got pulse crops, we've got oil seed crops. Within pulses like green gram, several kinds of pulses, green gram, black gram, peach, peach and pea, chickpeas, cluster beans, different kinds of lentils. Oil seeds, we've got sunflower, groundnut, sesame, safflower.
and aromatic crops, coriander, fenugreek, these kinds of crops. Then cereals, we have got finger millet, maize, pearl millet, jowar, etc. And under vegetables, we have got several kinds of vegetables. The fruit kind of vegetables, brinjal, tomato, okra, the leafy vegetables, different kinds of leafy vegetables, the creeping kind of vegetables, and we also got the tuber crop vegetables, radish, carrot, and all. Generally, in areas like paddy, in most of the areas all over AP, maybe in all the participating colleagues of NCNF, the parent states also, the practice of green manure would be common actually, which is grown prior to wheat or paddy with some basic preparation of soil, and they go for green manure like Sunham, Susbania, Daincha, and all. Here, instead of that single monocropping of one particular crop under this particular green manure, we are going for complete Navadanya, or as I was telling you, these different kinds of crop seeds. The basic purpose behind growing this sort of diverse crops is every crop root has got a different set of capability to attract different kinds of microbial organisms. The soil microbiome tends to vary from different kinds of these crop roots. But basically, as a matter of fact, these different microbes which cling to this root mass of different crops, very select number of these microbes have been characterized. There's a lot of work that is happening all over for ensuring what sort of different rapport, different kinds of relationships, different kinds of equilibria that keep between the plants and these different microbia. But based on our own internal experiments, conducted at farmers' fields and our own efforts from science team, we could easily assess that wider crop mix would definitely facilitate better norms, better grade in terms of soil fertility, in terms of increasing soil porosity, soil aeration, the required kind of fungi, their multiplication and all. They are all facilitated by these different kinds of roots in our, different kinds of crops in our promoting crop seed mix. Yes, sir. तो इस स्लाइड में सर पीएमडीएस की शुरुआत कैसे करनी है उसका एक इंट्रोडक्शन सर ने दिया है। तो पहले खेत की जुताई से, हल की जुताई से है पहला स्टेप। दूसरा है कि अलग अलग तरीके के बीज को मिक्स करके डालना है। फिर जो प्राकृतिक खेती की आपके जो प्रैक्टिसेस हैं मिट्टी में, चाहे जीवामृत डालने की या कुछ और दवाई, ये अपना और भी जो कल्चर्स हैं उनको डालने की, वो फिर जो क्रॉप यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सब्सिक्वेंट क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कई सारे क्षेत्रों में आज भी हरी खाद बोल करके मेन मुख्य फसल से पहले सनई, सन या ढैचा या ये सारी चीजें लगाते हैं, और उसके बाद में उसको रोटावेटर से मिट्टी में मिला करके फिर दोबारा से मुख्य फसल लगाई जाती है। ये एक प्रक्रिया कई जगह पे अभी भी होती है। तो इस पॉइंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि अलग अलग फसल लगाने से जो आगे आने वाली मुख्य फसल है उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले। और फिर एम्प्लॉइंग एपीसीएनएफ प्रोजेक्ट मेथड्स, जो उनकी टेक्निक रही है लैंड मैनेज और सीड पैलेटाइजेशन सर डिटेल में समझाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों बोला जा रहा है अलग अलग तरीके के। यहाँ पर अपने को दलहन भी है, तिलहन भी है, पल्सेस भी हैं, ऑयल सीड्स भी हैं, एरोमेटिक क्रॉप, खुशबू वाली भी क्रॉप की बात की हुई है। मेथी हो गया, धनिया हो गई, सरसों हो गया, अपने जो अनाज हो गए, सब्जी हो गई, हरी सब्जी, हरी साग वाले जो बीज हो गए वो हो गए। फिर अपने जो बेल वाले पेड़ होते हैं, जो भी अपनी लौकी, करेला, खरबूजा, ये सारी जो चीजें हैं वो। उसके बाद में ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो आपको पता है, और ट्यूबर क्रॉप्स की बात जितने भी कंद वाली चीजें हो गई, अपनी मूली, गाजर, है ना, कांदा, और भी जो चीजें हैं उन सारी चीजों। तो सर ये मुख्यतः कहना चाह रहे थे कि जैसे शायद अभी हमको जस्ट, हाँ इट्स ओके। तो सर बस ये लास्ट में ये कह रहे थे कि जैसे हमको पता है कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस में हमने सुना है कि पल्सेस या दलहन लगाने से नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, ऐसा हमको पता है।
तो एक ये भी कंपोनेंट है कि और जितने भी अलग अलग तरीके के हम बीज लगाते हैं, तिलहन भी लगाते हैं, साग सब्जी भी लगाते हैं, जितने भी अलग प्रकार के बीज होंगे वो अलग अलग तरीके के एक्सयूड्स अपनी रूट से रिलीज करते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स अपनी रूट से रिलीज करते हैं, और जितने डिफरेंट टाइप के, विविधता टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को मिलते हैं, उतनी ही अच्छी अगली फसल में उसके रिजल्ट्स हमें मुख्य फसल में दिखते हैं। तो ये एक बेसिक उसका प्रिंसिपल था। And one सर। thing, and actually, green manure, the total quantity of green manure, we are यस। asking, we are ensuring that it is the minimal possible, because there are certain green manures which are actively not taken by animals. So what we want to हम्म। ensure is we don't हम्म। trample the entire crop. Generally, when green manure is grown, when it reaches that stage of flowering, say 40 to 50 day stage, that is करेक्ट। generally trampled into the soil. But करेक्ट। we natural farming under PMDS, we हाँ। don't 100% encourage entire crop to be trampled down into the soil before the main crop. ओके। The basic idea is wherever feasible and possible, हाँ। we ensure that it is put to foraging for cattle, ओके। 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 because based on our initial farmer experiences, the basic observations, their perceptions that have come is the cattle that has been fed on the leaves of these different kinds of PMDS crops, हम्म। they tend to yield more milk, and the fat हम्म। content also has increased over a period of time. This is what हम्म। has come from the farmers. ओके। And the actual kind of the root exudates, because we are saying the root exudates and their healthy association with microbes is the critical part of the entire thing. So once the करेक्ट। entire top part, when the entire foliage part, even that gets completely defoliaged also, हम्म। even though the remaining part only, that also can be plowed, and based on that, even for a crop like paddy, the next crop can be raised. ओके। And ओके। apart from that, the farmers, they are also realizing some good incomes under हम्म। PMDS, हम्म। because they are using these vegetables and all for their own self-consumption. They're giving हम्म। their extended families. They're also ensuring that हम्म। they get some marketable value by selling to those people close by. These are all the other हम्म। advantages also behind PMDS. ओके। तो सर ने एक मुख्य कारण ये भी बोला कि जैसे और जगह पे जब हम सन या ढैचा या सेसबेनिया इस तरह की चीजें लगाते हैं हरी खाद की तरीके से, तो क्या करते हैं कि जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और मुख्य फसल अपने को लगानी होती है, तो उससे पहले हम पूरी तरीके से उसको काट करके जमीन में मिला देते हैं कि ये पूरा पूरा कट करके जमीन में मिल जाए और वहीं पर सड़ करके न्यूट्रिएंट्स दें। लेकिन पीएमडीएस के अंदर में यहाँ पर ये प्रक्रिया की जाती है या कोशिश ये की जाती है कि पूरी तरीके से उसको काटा नहीं जाए, जो बचा हुआ पार्ट है जो भी फसल का, उसको चारे की तरह कैटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जानवरों के लिए जो भी बचा कुचा, एक कारण वो है। और सर ये भी बोल रहे थे कि जिन किसानों ने ये प्रक्रिया ट्राई की कि उन्होंने अपनी मुख्य फसल लगाने से पहले कुछ 10-15 तरीके के बीज डाले थे, वो जब थोड़े से बीज बड़े होने लग गए तो उसके अलग अलग उपयोग हैं। अब मान लीजिए इन जितनी भी लिस्ट है, इसमें से अगर 15-20 चीजें हैं, तो इसमें से 5-10 चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप थोड़ा थोड़ा मार्केट में बेच भी सकते हैं। जब इतनी विविधता है तो उसके बेचने के भी ऑप्शन है, वो भले ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होंगे, लेकिन एक वो भी ऑप्शन है। दूसरा सर ने ये बोला कि जो वहां के किसान हैं, जो बचा हुआ पार्ट था पौधे का, उसको उन्होंने जानवरों के लिए छोड़ा, और जब जानवरों ने इतनी अलग अलग तरीके की चीजों को खाया, तो उनसे उनके दूध में भी फर्क आया, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में भी फर्क आया। ऐसा किसानों का अनुभव रहा है जिन क्षेत्रों में ये ट्राई हुआ है। Thank you. यस। Just talking about pelletization, as we told very clearly that I have seen, I'm browsing through certain questions also. I think some of the initial questions were talking about when it is quite hot without plowing, how do we broadcast or sow the seeds and all. Here comes the significance of pelletization. This pelletization is not a very new concept. It has been done in previous our forefathers, and even it has been talked about even even in our Vedic text. The concept of pelletization.
for forestry and all agroforest. The forest department also does it extensively for ensuring that new forest covers come up. Now we are using it as we have slightly modified these techniques, and we are using it as an effective form for ensuring the better propagation of PMDS. This is the broad process we have explained over here. Generally, what's the requirement? Why do we do pelletization? Because it protects the seed from the harsh weather, from the problem of these insects, ants, birds, and it ensures that the germinability, the basic viability of the seed, is sustained for at least a period of 6 months. And generally, these pelletized seeds are treated with Bijamrut and Jivamrut, and because they are biostimulants for better crop germination and better crop establishment sufficiently when initial germination happens, the both are equally important. So Bijamrut acts as a seed coat, and Jivamrut subsequently facilitates better crop establishment. And for this pelletization of the different seeds, the major materials that are required are Bijamrut, clay powder, and the Jivamrut, the solid Jivamrut powder, ash powder, and a gunny bag, and Jivamrut liquid formulation, solid and liquid formulations of Jivamrut. Generally, for the process of preparation, what we do is the selected seed, we place it on a jute gunny cloth and we sprinkle Bijamrut on the seed. Well, simultaneously, we also shake the bag continuously to roll the seeds. There are very good videos of pelletization. They're available online. We'll also share you the links. Most of you might already browse through them, the pelletization technique. Uh, we use we use a gunny bag for shaking all this continuously, and so that the seeds get rolled properly and the Bijamrutam gets applied uniformly all across. Once we confirm that Bijamrutam more or less sufficient coat has been obtained all over the seeds, then we add fine powder of clay to these seeds and shake the bag continuously until the first initial clay coat forms on the seeds. After this Bijamrut, there must be a coat of this clay after Bijamrut. Subsequently, we have a fine powder of Jivamrutam as the next layer after treating with Bijamrutam. Then we treat that with ash powder as the next layer, and we sprinkle some amount of water or even Bijamrutam alternately on each layer, so that there is proper addition for the subsequent layers. This process is to be completed regularly, generally until every seed, we generally are aware every seed has got its own general dimensions, its own sizes and all. So unless and until it gets into at least a minimum of 5 to 10 times, we ensure that the process of pelletization continues. This is a broad process. Generally, for every 10 kg of seed, we require clay powder around 10 to 20 kg and Jivamrut around 5 to 10 kg. These are the basic materials. And except very small kinds of seeds like mustard, all the other coarse seeds, all sorts of coarse seeds can definitely be pelletized. Yes, sir. Okay. So for let's say if there are two, three small size of seeds, will they go in one seed ball or they will be like No, bigger sir. seeds? No. Yeah. Every seed has its own seed ball. Every seed gets into seed pellet. Okay. All the coarse seeds, they get into a separate seed pellet. ओके तो पैलेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य ये है कि अगर जैसे जो सवाल आया था कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, या बहुत सारे और भी इश्यूज रहते हैं कि कभी चिड़िया या कोई जानवर बीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं, चींटियां बीजों को नुकसान पहुंचा देती हैं। उस स्थिति में जब हमारे पास कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन हो सकती है, उस चीज स्थिति से निकलने के लिए सीड पेलेटाइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें सीड को एक बीज को अलग अलग लेयर में बांध करके उसको रखा जाता है और फिर उसको जब वो अलग अलग लेयर मिल जाती हैं उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो अगर बारिश 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी डिले आगे पीछे होती है, उस सिचुएशन में भी वो पोटेंसी उसके अंदर बनी रहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउइंग इट टू रिमेन वाइबल फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक वो ठीक ठाक रह सकता है। किस तरह की लेयर्स की बात हो रही है?
पहली लेयर है कि आप अपने बीज को बीजामृत में डिप करें, बीजामृत से ट्रीट करें। उसके बाद में जो क्ले पाउडर है, जो अपनी काली चिकनी मिट्टी होती है, उससे एक कूट बनाएं। उसके बाद में जो अपना घन जीवामृत है या जो सूखा हुआ जीवामृत का पाउडर है, उसकी एक लेयर बनाएं। और उसके बाद में जो राख है, ऐश, उसका एक कवरिंग करें। ये मल्टीपल लेयर्स है, और इन लेयर्स के बीच में हल्का हल्का स्प्रिंकल जीवामृत का या छिड़काव हल्का हल्का जीवामृत का भी रहे। जीवामृत एक इनोक्यूलेंट, मतलब जो बैक्टीरियल प्रोसेस है, बायोस्टिमुलेंट है, उसकी तरीके से एक्ट करता है। तो ये सीड पेलेटाइजेशन की प्रक्रिया, जो विषम परिस्थितियां हैं जिनमें सीड को मुश्किल हो सकती है जर्मिनेट करने में, उससे निकलने में मदद करता है। और इसकी वीडियोस और ये सारी चीजें भी हम लोग कैसे प्रॉपरली बनाना है, बनाते हुए कई सारी वीडियोस हैं, वो हम आपके साथ साझा करेंगे बाद में। सर, Yes, sir. Thank you. And these are certain pelletized seeds. The moment the process is completed, the seeds look like this. ओके ओके। तो ये 6 प्रकार के यहाँ पर सीड पैलेट बनाए हुए हैं। इसमें रेड ग्राम, कैस्टर, काउपी, क्लस्टर बीन, फील्ड बीन, बाजरा के ये अलग अलग तरीके के बीज आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। Yes, sir. Now, to talk about the general advantages of PMDS is instead of waiting for these rains, incidents of rainfall, even in semi-arid rainfed areas also, the farmer, as I was telling you initially, we can have a crop of one economical crop. It's not just a crop just for soil nutrition, just for increasing soil fertility. Farmer can realize viable commercial yields from a crop of PMDS. So that way, he'll be benefited by having one more crop. That is one initial advantage. And thereby, the farmer having only Kharif will be actually benefited by taking a PMDS crop prior to Kharif. Followed by that, he'll also have a crop of RDS. If a farmer has got Kharif and Rabi already, then because he has this PMDS crop, he'll be benefited by that. So the number of crops in a calendar period of a year, the crop will be increased thereby. And the point two is like 3 days, the entire thing, because the soil will be kept covered, the incomes of farmers are also there are more chances of incomes also doubling. Actually, in many of these areas, because of no incidence of rains, because of poverty, because of different other problems in certain remote areas which are subject to the vagaries of this monsoon, there is a practice of people getting migrated to nearby adjacent urban areas, and this problem can be sorted out over a period of time. Already, we are seeing certain issues, certain families getting back in the villages where they thought they could not raise anything over here. Because of PMDs, they could get some crops, and also seeing these benefits. Certain of these families who got migrated are also getting back in certain villages of Rayalaseema districts. And we also talk about crop biodiversity, which is a key component of PMDS. Where instead of monocrop, we got polycrops. And because it's a very important prerequisite, this will create crop biodiversity along with the main crops. And because of crop biodiversity, there is also the nature of complete management of risk. Can manage risk. And in terms of market related problems also, one crop might fetch a better price, one crop might not fetch a better price all over. So these sorts of market related risks also can be minimized because of having this crop biodiversity. And one more important field level parameter because of crop biodiversity is you can minimize the impact of pests and diseases. Pest and disease management can be comparatively more so pest management. The incidence of different pests can be minimized because one takes care of the other. There will be a natural positive buildup of the basic beneficial insects. Pest defender ratio will be adequate. All these are advantages of crop biodiversity. Over a period of time, as we gradually graduate to a period where the farmer is continuously adopting this PMDS, keeping the soil covered for all 3 days. Over a period of time, what happens is even the use of botanical concoction does not arise. Even the use of mechanical devices doesn't arise
because the crop, the soil, the farmer got habituated to the entire system of cultivating through enough with the basic intervention of the paradigm shift of PMDS. This sort of changes are also bound to happen in the very immediate future. Next, we also have got profound different other impacts like the increase in the main crop yields. There will be regular incomes to the farmers. As I was telling you, pest problems will be reduced. Overall water requirement, PMDS, as we talked about right from the initial stage, it can be sown with a very minimal amount of water. Crop can be raised with minimal amount of water. There will be reduced water requirement. And because we are producing this natural farming produce under different crops with the nutrient dense nature of nature of different minerals, different kinds of all the required substances for the human health, our nutrition will improve. Generally, we say when the soil is good, crop health is good, all these translate to good human health. So this is also one important, very important impact of PMDS. Yes, sir. Please go ahead. I'm sorry. Yeah. So, किस तरह के प्रभाव दिखे हैं पीएमडीएस के पिछले कुछ सालों में, उसकी यहाँ पर चर्चा सर ने की है। तो पहला तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है कि जैसे जो बारिश के ऊपर निर्भर क्षेत्र हैं, काफी सारा बड़ा क्षेत्र है, और हमारे जो भी किसान हैं, दीदी भैया लोग, वो कई बार इस समस्या से कि कब बुआई करनी है और बारिश पे निर्भर है। अगर उनके पास इरिगेशन नहीं है तो सिर्फ उनके पास में खरीफ की ही फसल है। उस समस्या से निकालने की ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर दीदी को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो बिना बारिश के भी, मतलब अगर एक बारिश का सीजन हो गया लेकिन उसके बाद में भी कुछ और फसलें लगा सकते हैं, और जहां पर उनको पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक दो बारिश से सरवाइव कर जाएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए। ये प्रॉमिस, तो एक फसल जहां लेते थे वो बढ़ करके 2 से 3 फसल हो गई है साल भर के अंदर में अब। और जो मिट्टी हमेशा ढक खुली हुई रहती थी या इस पे कुछ लगता नहीं था, अब वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें कुछ ना कुछ 365 दिन में रहती हैं। तीसरा पॉइंट की बात ये हो रही है, क्योंकि जब खेतों में काम बढ़ा है, खेतों के साथ में एंगेजमेंट बढ़ा है, तो जो लोग खेत गांव छोड़ करके बाहर जा रहे थे उनका भी थोड़ा ठहराव हुआ है, क्योंकि गांव में ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी थोड़ी बढ़ी हैं, एक दूसरे के खेत में काम करने की, एक दूसरे के जो एक्सचेंज होता है उस तरह की चीजें खेतों में बढ़ी हैं। और क्रॉप बायोडाइवर्सिटी 10 से 15 फसलें एक साथ अगर लगा रही हैं तो जो मुख्य फसल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी, अगर आपके खेत में जंगल में बहुत सारी चीजें अगर एक साथ लगाई जाती हैं तो उसका एक अलग ही एक इम्पोर्टेंस रहता है कि वो सारा मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से प्रकृति के नियमों के हिसाब से करता है। तो उसकी बात कर रही है कि अगर आप 10-15 तरीके के अलग अलग फसल लगाते हैं तो उनका इम्पैक्ट कैसे मुख्य क्रॉप पे पड़ रहा है, उसकी यील्ड कैसे बढ़ रही है ना। और दूसरी बात की कि जब आप इतनी सारी फसलें लगा रहे हैं तो पेस्ट की भी प्रॉब्लम कम हुई है, पानी का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ है, और सिर्फ मिट्टी में 15 से 20 क्रॉप लगाई जा रही है, तो उसका ये भी मतलब है कि कहीं ना कहीं खुद के खाने में भी उसका इंक्लूजन हो रहा है। तो लोगों के खुद के स्वास्थ्य के ऊपर भी इस तरह के इम्पैक्ट आए हैं सर। या Yes, sir. Thank you. Next, apart from these direct benefits that get realized with the farmer himself, you also got several indirect benefits like there is a tremendous improvement in the soil quality, the soil fertility increases, soil aeration increases, water holding capacity increases, the multiplication of earthworms within this within the soil beneath the soil, they also increase. And there is also a better exhibition of crop resilience by all these natural farming crops grown under such conditions, PMDS and this crop diversity. We had seen several such examples in many of the upland areas in different other districts, particularly Rayalaseema all over. Because this crop resilience, the kind of resilience these PMDS crops exhibited to continuous dry spells, even for floods and cyclones. We have got a recent cyclone called Bishop. Most of the colleagues in the call might be aware. And in a crop like paddy, in a crop like banana,
crop like chili, every crop, you name a crop, a natural farming crop, this crop exhibited very good resilience, and comparatively, it is very clearly visible in the field, actual field conditions. And actually, for 24-25, we tapped this crop resilience, especially due to heavy rains and because of drought conditions, to ensure that many more people get into the bus of natural farming and adopt it comparatively in a more hastened pace. So that way, crop resilience is very strongly demonstrated through PMDS, through intervention of PMDS. And improved nutrition of food that we anyway talked. I think that point has got repeated. Water availability. Generally, it's a common phenomenon in all the drought areas. We have a problem of we have a problem of drinking water. We have a problem of not in a position of tilling land, and we don't have the time and the resources to feed our cattle. So in this sort of a very chronic situation, because of this fodder coming up with the sort of crop mix in this PMDS we are trying to promote, there will be fodder availability also. Comparatively, the situation will be improved. And this biomass also, we are providing nutritive food to the cattle. And as I mentioned initially, milk yields, increase in milk yields also has been very prominently noticed. And this PMDS has been, thanks to the efforts of our CTIO and DPM Anantapuram, a lot of good work has happened there. And even degraded fallow lands, they are also being brought to life. Completely degraded, where previously there was not any sort of cultivation, any sort of cropping altogether. You will be astonished to really see in the fields that such sorts of lands are also have been brought to life with this PMDS intervention, with adequate utilization of pelletization technique. And increased cropping intensity, as I was telling you, instead of 1 or 2 crops, because this being perceived as a new crop with good economic value, the cropping intensity also tends to increase. And with PMDS, with these multifaceted advantages, prior to the growing of the main crop, the farmer acceptance, the capability of the farmers to welcome this intervention, to get into natural farming, is also comparatively more. It acts as a catalytic system. And over a period of time, due to the synergistic effect of all of these different sets of parameters, it also has got its own say in impacting climate change and minimizing the losses we are already having to see right now. Yes, sir. सो कुछ और इम्पैक्ट या कुछ और प्रभाव जो इस चीज के सर ने बताए, उसमें से एक चीज रही जो इम्पोर्टेंट, और इसका इसका एक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ था एपीसीएनएफ का कि किस तरीके से इम्पैक्ट है। तो मुख्यतः इस तरह की प्रक्रिया को फॉलो करने की वजह से फसलों में एक अलग तरीके का मजबूती आई है। मजबूती किस चीज के लिए? मजबूती सूखे के प्रति, मजबूती एक्सटेंसिव बाढ़ के प्रति, या कहीं पर अगर तूफान आंधी इस तरह के जो अपने कोस्टल एरियाज में रहते ही हैं इश्यूज, वहां पर उनको वहां के जो पौधे हैं इन कंपैरिजन टू आर केमिकल क्रॉप्स, प्राकृतिक पीएमडीएस और नेचुरल फार्मिंग के तरीके से उगाई हुई जो फसलें हैं वो ज्यादा मजबूत फसलें हैं, जो सूखे को भी झेल सकती हैं, बाढ़ को भी झेल ले सकती हैं, और अगर कुछ तेज हवा या इस तरह का कुछ आता है तो उनसे भी लड़ने में सक्षम है। दूसरा, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन की बात हुई कि हमारे खुद के खान पान में जो प्रभाव आते हैं वो बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि कभी हम एक चीज सिर्फ गेहूं और चावल खा रहे हैं और कभी हम गेहूं चावल के साथ में अलग अलग दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके पोषण तत्व भी हमारे अंदर आ रहे हैं। तीसरी चीज, अलग अलग प्रकार के चारे की उपलब्धता बढ़ गई है। जो पहले सिर्फ 1 या 2 चीजें चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, वो अब और ज्यादा पोषक से भरा हुआ चारा जानवरों के लिए उपलब्ध हो गया है। पीएमडीएस को ऐसी जगह भी ट्राई किया गया है जो कि एकदम बंजर जमीन है, जो कि एकदम खराब जमीन है, जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, मिट्टी कम है, पत्थर ज्यादा है, वहां पर भी कुछ प्रयास किए गए हैं और जहां पर उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है कि जहां पर आप 1-2 चीजें लगा रहे थे अलग अलग जगह पे, आप कई सारी चीजें एक ही जगह पे लगा रहे हैं, तो उसका एक इंटेंसिटी भी बढ़ गया है कि जहां पर अलग अलग फसलें अलग अलग तरीके के रोल उस इकोसिस्टम में प्ले कर रही हैं। ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ प्राकृतिक खेती की तरफ एक एक्सेप्टेंस बढ़ा है। और आखिरी पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए ध्यान देने के लिए, कि
पिछले 4-5 सालों में भी, और साल दर साल हम ये देखते जा रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। कभी बारिश एकदम से हो जाती है, कभी बारिश कई समय तक नहीं होती है, जब जरूरत होगी उस समय नहीं होगी, बाद में होगी, एक्सट्रीम हीट्स हो जाएगी, एक्सट्रीम, या तो फिर जैसे राजस्थान में बारिश हो गई गेहूं के ऊपर तो गेहूं काले पड़ गए, इस तरह की चीजें आगे पीछे बहुत हो रही हैं। तो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं लड़ने का और उन सब चीजों के साथ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकालने का मौका है पीएमडीएस के माध्यम से। Thank you, sir. थैंक Next, we have got some success stories of some of certain farmers from Anantapuram only. Sridevi, she is our farmer trainer. She is one of our farmer trainers, and she practiced PMDS in 1 acre of dry, complete red soil. And there she also has growing. She grows a mix of crops. Groundnut, she has got castor, she has got lady's finger, tomato. Completely rain-fed farmer. She's completely rain-fed, and she has inspired several other farmers within her vicinity who want to take PMDS. Yes, sir. तो ये श्रीदेवी जी हैं, ये हमारे सीआरपी भी हैं, इस प्रोग्राम में, एपीसीएनएफ के इस प्रोग्राम से जुड़ी भी रही हैं, और इन्होंने पीएमडीएस अपने 1 एकड़ के जो पैच है उसमें ट्राई किया। वहां पर उन्होंने मूंगफली भी लगाई हुई है, अरंडी भी लगाई हुई है, भिंडी भी लगाई, टमाटर भी लगाया, और ये सब मुख्यतः पूरा बारिश वाली खेती वाला क्षेत्र है। तो इतने सारे मिक्स लगाने के बाद में उनको जो फायदा हुआ है उसका ये सक्सेस स्टोरी है। Similarly, we have got one more lady, Mrs. Radhamma from Kantapuram, Saksai district. Completely rain-fed areas. She has raised groundnut is the main crop and intercrops cowpea, field beans, pearl millet, castor, and she has also raised sorrel. In 22-23, in the Rabi groundnut model, she has raised 23 quintals in that season. And she has got realized around 1,35,000 income by gaining an amount of rupees 5,869 per quintal. Apart from that, she also raised incomes from other intercrops. Actually, this is one very important factor that is directly playing on the incomes of farmers. Farmers are quite encouraged to see that through these intercrops, apart from crop biodiversity, taking care of pest management. To tell you, this crop biodiversity, because of that, because of non-application of synthetic chemicals, many other very good examples of biodiversity, like these places, these natural farming fields have become nesting places for lots of birds, lots of honeybees. Lots of birds are also they are making it as their place for sustaining their populations, because this kind of diverse kind of chemical-free environment, which is quite prominently noticed over there. And she uses her own seed, the practice of using her own seed, as that is also one of our important principles, or a matter of time. Once they start producing different kinds of crops through this kind of different models, PMDs and all, so they start reaching a stage of self-sufficiency where they don't rely on different others for procuring seed. Their own seed is used for ensuring that they sow for the next crop. And he has got 2 desi cows. She prepares her own Ghana Drava and all. And Rabi is again followed by pearl millet, maize, cluster beans and all. So she is also one good example. Through her success story, she has motivated 50 more farmers to get into natural farming in a very quite short period of time. जी, तो Yes, sir. यहाँ पर राधम्मा जी की बात हो रही है श्री सत्य डिस्ट्रिक्ट से। उनका 2 एकड़ का खेत है, और 2018 से वो ये प्रक्रिया अपने खेत में कर रही हैं। और जैसे उनका मुख्य फसल कह लीजिए मूंगफली है, उसके साथ में उन्होंने लोबिया भी लगाया है, फील्ड बीन्स भी लगाए हैं, बाजरा भी लगाया है, अरंडी भी लगाया है, और इस तरह की 4-5 एक्स्ट्रा फसलें भी लगाई हैं जो मुख्य फसल में है। 2022-23 में उनका जो रबी ग्राउंड मॉडल का इसका जो ईल्ड्स है, 23 क्विंटल उनको मूंगफली निकला था 2 एकड़ के खेत में, जिसमें 1,35,000 रुपए उनकी कमाई रही है। 5,000 लगभग 6,000 रुपए पर क्विंटल के रेट के हिसाब से।
और जो बाकी की चीजें उन्होंने लगाई थी, जो अलग इंटर क्रॉप्स उन्होंने लगाई थी, उससे भी उनकी करीबन 15 से 1000 रुपए की कमाई हुई है। ये दीदी खुद का ही बीज इस्तेमाल करती हैं, उनके पास में खुद की 2 गायें भी हैं जिसको वो इस्तेमाल उसके सारे इनपुट्स को बनाने में उसका इस्तेमाल करती हैं। खुद का घन जीवामृत, द्रव जीवामृत बनाती हैं, और रबी में फिर से मल्टीपल चीजें लगाने की प्रक्रिया करती हैं, जिसमें बाजरा है, मक्का है, अपना क्लस्टर बीन्स है, फील्ड बीन्स हैं। ये सारी चीजें एक तरीके से लगाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि 2 सीजन में भी कम से कम उन्होंने 10 से 12 तरीके की अलग अलग फसलें लगाई हैं, दोनों सीजन में, खरीफ और रबी को मिला करके देखा जाए। यस सर। Right, sir. हाँ, This एक is चीज सर, another और cotton. यू फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आई फॉरगॉट दैट। सर ने ये Yeah, बात yeah, please. बोली कि इस खेत में ये भी ऑब्जर्व किया गया है, जहां पर ये सब प्रक्रिया हुई है, जो पहले कभी खाली पड़े रहते थे खेत, अब वहां पर बहुत अलग अलग प्रकार की चिड़िया आने लगी हैं, बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु आने लगे हैं, जो भी एक अपने आप में शो करता है कि बायोडाइवर्सिटी अपने आप कैसे बढ़ती है जब आप वहां के इकोसिस्टम, मिट्टी के इकोसिस्टम को सही करते हैं, तो और भी चीजें अपने आप आने लगती हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. And this is a cotton farmer, Hari Prasad ji from Anantapuram. Here also the same kind of success story. He has raised these 2 acres of red soil. He was into natural farming for the past 5 years. He has grown cotton along with that field bean, cowpea, several vegetables, bajra, cluster bean. There are about 20 plus kinds of biodiverse crops, category into millets, vegetables, oil seeds, several categories. And he has raised, this is a total net return from him based on his economics. Yes, sir. यस। तो यहाँ पर भी एक और किसान है, हरिप्रसाद जी, उनके खेत की बात हो रही है, और उन्होंने कॉटन लगाई हुई है। कॉटन मुख्यतः उनकी फसल है, और उसके साथ में करीबन 5 साल से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। 2 एकड़ की जमीन है। कॉटन के साथ में फील्ड बीन, काउपी, लोबिया, और कई सब्जियां, बाजरा, क्लस्टर बीन, ये सब भी उन्होंने लगाए हैं। और उसके अलावा भी 20 वैरायटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कई सारे कोदो कुटकी मिलेट्स टाइप की चीजें भी लगाई हैं। कुछ तिलहन लगाए हैं, तेल वाली चीजें लगाई हैं, सरसों जैसे हो गया, तिल हो गया, लीफी वेजिटेबल्स जैसे अपने ये राम अमरैंथस बोलते हैं, वो हो गया, पालक, फिर अपनी अलग अलग सब्जियां जो हैं, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, ये भिंडी, ग्रीन ग्राम, और ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड की हुई हैं। इसका एक कॉस्ट ब्रेकअप यहाँ पर दिखाया हुआ है। 2 एकड़ है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगभग उनका जो खर्चा हुआ है वो 25,000 के रुपए के करीब खर्चा हुआ है। प्रोडक्शन जो है 22 क्विंटल है। इनकम फ्रॉम द मेन क्रॉप, सिर्फ कॉटन की बात हो रही है, तो करीबन 2,20,000 रुपए का उनका इनकम हुआ है। इनकम फ्रॉम द इंटर क्रॉप्स, जो बाकी की एक्स्ट्रा फसलें थी, उनसे करीबन 23,000 रुपए की कमाई हुई है। टोटल जो है 24,03,000 रुपए उनका हुआ है, और उसमें से अगर 25,000 ऊपर का माइनस कर देते हैं तो करीबन 2,18,000 रुपए उनका नेट कुल फायदा है इस खेत का। जी सर। Thank you, sir. There are several certain examples like this. We'll be sharing you the video links and several other kinds of information based on your interest. Yes, sir. यस, यस। तो अभी हम जो कुछ लोगों ने मैसेज भी किए हैं कि सीड पैलेटाइजेशन का वीडियो और सारी चीजों का भी वीडियो, Yes, sir. वो Yes, एक sure, साथ sure. हम कंपाइल करके आप सबको Yeah, भेजेंगे। fine, sir, fine. Next, here we talk about apart from this PMDS initial intervention have led the project to think on this three-spade green cover, which we were talking. यस। So this three-spade green cover, the concept of three-spade green cover, that is, we have reached a stage where we are trying to track the journey of the farmer for a period of 12 months. The guy started with PMDS, natural farming journey with PMDS. We want that farmer to continue after PMDS with the Kharif natural farming crop. If he has got Rabi, then he'll go for Rabi natural farming crop. In case Rabi is it there, recognized Rabi, he'll go for RDS over there. So that way, the PMDS, this has led us to ensure that the initial key critical principle of natural farming, that is keeping the soil covered with living roots 3 days a year, is powerfully established. This fundamental initial intervention of PMDS.
And through this, we wish to ensure that this takes care of drought proofing, the basic complete reversal of the degraded lands, complete deserts, increasing the land equivalent ratio, increasing cropping intensity, providing year-long incomes to farmers. All these things, apart from based on the initial intervention of PMDS in Anantapur, now the people in Anantapur have graduated further, and they have started saying it is not just PMDS. You would ensure that most of the farmers who start PMDS complete the entire journey of 3 days. They don't just complete PMDS either before Kharif or in between Kharif and Rabi, or if they don't have Rabi, instead of Rabi, RDS. What they have completely realized and promoting are towards ensuring that this 3 day green cover is actively practiced by more number of farmers. So that way in 2020, they started this 3 day green cover practice with 110 farmers, and now it has gone to around 10,000 farmers who are actively practicing 3 day green cover in Anantapur. And now this is again being increased to 30,000 in Anantapur and the remaining all other districts of AP. Okay. From this, most of these examples we have advantages we have already discussed. Farmers have been getting regular incomes on a monthly basis from these rain-fed arid lands, at least 1 lakh per acre net income. They must realize over a period of time from these rain-fed lands, which is generally 3 to 5 times higher. When they were practicing conventional agriculture, the costs of cultivation are quite high on account of exorbitant costs of fertilizers, excessive cost of the seed treatment chemicals, herbicides, and the plant protection chemicals and all. So compared to that, even though in certain areas, despite all these odds, they're realizing certain yields in terms of economy, in terms of cost benefit ratios, it's not working out to them effectively. So most of the farmers in these semi-arid areas also, because they're confident that through the technique of PMDS, they have reached a stage of successfully cultivating in the degraded lands. People have started resorting to this practice, and they are realizing better incomes and restoring the degraded lands. Yes, sir. मानस थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, तो थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि प्रकाश बस जी ये को second Completed, last sir. slide है. Completed. Second last क्वेश्चन slide. आंसर रखेंगे. Yes, sir. I am This is done. the I am second. done. This is ठीक, second ठीक. last slide. Yeah, second last. And Yeah. here, sir, these two also I'll complete, sir. Manas ji, then you can Yes, complete. yes. And here we have broadly shown you as to how this 3-way DGC operates. Like this is the PMDS window. PMDS window is from April to June. Then we get the Kharif window, groundnut with other crops, followed by Rabi window. This is for red soils. Black soils also similarly, we ensure that these 3 crops are grown with these 3 kinds of seasons are covered with different kinds of cropping patterns. So as I said, this pre-monsoon dry sowing, this 3-day green cover is slowly working as a very good complete revelation as a breakthrough soil and water paradigm under natural farming, and it is one good effective solution which would slowly being looked at as a very good alternative as for drought proofing of the entire planet. Having said that, thank you very much, sir. Especially thanks to Manas ji for having patiently translating every word effectively into Hindi so that most of the content doesn't get missed. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. तो सर ने इस स्लाइड में बस ये थोड़ा सा शेयर किया है कि ये जो PMDS प्री मॉनसून ड्राइंग सोइंग और 365 दिन ग्रीन कवर का जो उद्देश्य है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे चीजें बदल रहा है. अनंतपुर बहुत प्रसिद्ध रहा है बहुत सारे कारणों की वजह से, और वन ऑफ द मेन रीजन है कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी की कमी है वहां पर. तो उस जहां पर मतलब जैसे रिवर्सिंग डिजर्टिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर अच्छी मिट्टी खत्म होकर के रेत बन रही है, रेगिस्तान की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उसको कैसे वापस
प्रक्रिया ला जाए, वहां पर पीएमडीएस और 365 डेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो मिट्टी एकदम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी खो चुकी है, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे हैं, माइक्रोब्स नहीं बचे हैं, उसको भी, ऐसी मिट्टी, ऐसी जमीन जो खराब हो चुकी है, उनको बेहतर करने में ये बहुत बड़ा बहुत मदद कर रहा है। दूसरा है इंक्रीजिंग लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब जहां पर एक तरह की फसलें, जैसे जब मुख्य फसल एक कोई हो गई और कहीं जहां पर अंतर्वर्तीय मिक्स फसलें लगाई गई हैं, तो उन दोनों की उपज, मतलब जो इंटरक्रॉपिंग वाला है उसका भी उपज इक्वली बढ़ रहा है। ये एक अपने आप में प्रूफ है कि ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें रही हैं जिसकी वजह से पीएमडीएस आज एक अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की तरीके से दिख रहा है, ऐसी खासकर जगहों में जहां पर पानी की समस्याएं हैं, छोटे किसान हैं, मिट्टी में अच्छी मृदा नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है। उसको रिवर्स करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। शुरुआत हुई थी कुछ 110 फार्मर से 2020 में। 2022 में 10,000 फार्मर्स ने अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में किया, और आज 2023 में करीबन 30,000 किसान अनंतपुर के 25 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रक्रिया कर रहे हैं। और सबसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, हार्श इन्वायरमेंट है, वहां पर ये सारी चीजें ट्राई हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द किसान्स का करीबन 1 लाख का पर नेट उनका फायदा रहा है हाउस होल्ड लेवल पे 1 साल में। यस सर, नेक्स्ट वन जो है, ये एक बेसिक क्रॉप कैलेंडर सर ने बताया है वहां के लिए, अनंतपुर के लिए, क्योंकि वहां पर दो तरह की सॉइल है, एक लाल मिट्टी है, एक काली मिट्टी है। तो लाल मिट्टी में अप्रैल मई जून में आप जो पीएमडीएस वाली विंडो देखेंगे, वहां पर मिलेट्स के साथ में, मिलेट्स और पल्सेस के साथ में 22 अलग तरीके की फसलें और भी लगाई जाती है। मतलब जो अपना ज्वार बाजरा है और दलहन है, उनके साथ में और भी 20-22 फसलें लगाई जाती हैं। फिर खरीफ में देखेंगे तो मूंगफली के साथ में कुछ 20 से 21 तरह की फसलें लगाई जाती हैं, और रबी में सब्जियां लगाई जाती हैं, और वो भी अलग अलग विविध तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं। जहां पर काली मिट्टी है, वहां पर भी मिलेट्स के साथ में, लेकिन वहां का ड्यूरेशन मई और अप्रैल और मई का हो गया है। वहां पर कॉटन, क्योंकि कॉटन ब्लैक सॉइल्स में अच्छी ग्रो होती है, तो कॉटन एक मुख्य फसल है। उसके साथ में बंगाल ग्राम और 21 तरह की अलग फसलें और वेजिटेबल्स रबी के विंडो में लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका आप पूरे को समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि जमीन खाली नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो मुख्यतः ये है अभी के लिए। यस, थैंक यू प्रमिल जी, इफ यू वांट टू टेक कम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गोपीचंद जी आपका। और आपका जो पूरा का पूरा जो एपीसीएनएफ में पीएमडीएस को लेकर कार्य करने का एक बड़ा अनुभव रहा है, उसको आपने यहाँ समराइज किया। और हम सभी एनसीएनएफ के जो पार्टनर संस्थाएं हैं उनके साथियों को आपने बताया। बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं एक बार मानस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रकाश जी को हम लोग सुन लें और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करें सत्र को। तो प्रकाश जी, अ, प्रकाश जी। प्रकाश गारू, प्रकाश सर। हो सकता है वो उनका या कोई कॉल हो सकता है या कहीं हो सकता है, तो या माइट बी। वी कैन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू आप जो सवाल बताएं गोपी सर उसका उत्तर देंगे। ठीक है। ऑल यस राइट प्लीज। गोपी सर। या यस सर, या ठीक नो है। इश्यू। सो एक सेकेंड, आई एम रीडिंग थ्रू द क्वेश्चंस। मानस भाई, आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, उसमें सारे प्रश्न जो भी अच्छा, पार्टिसिपेंट उसमें चैट पे देख। व्हाट्सएप पे, चैट पे शेयर किया, एक सेकेंड। तो साथियों, जो आप लोगों ने जो भी अभी तक चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे थे उन सबको हम लोगों ने समराइज किया है। एक एक करके मानस प्रश्न पूछेंगे और गोपी जी उनके उत्तर देंगे। इसके बाद हमारे पास वक्त बचेगा तो सब लोग अपनों अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका फिर आपको जवाब मिलेगा। और वीडियो लिंक सब शेयर किए गए हैं, जो इस पूरी तकनीकी को लेकर जो आपके सवाल हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, वो हम आपको सबको साझा कर देंगे।
तो पहला सवाल ये था, और आई थिंक इसका जवाब तो दे दिया था, बट सर द क्वेश्चन वाज कि इफ रेन डजंट हैपन हाउ फार्मर्स स्टार्ट सोइंग ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। तो Yeah, वो basically the basic purpose of PMDS was to pellet ensure that we don't miss the window and go as per the regular plan. करेक्ट Pelletization is one good answer for all that. Sir, करेक्ट before करेक्ट that, I would like to understand whether some of these team members, I believe you have gone to some North Coast, is it? Have you visited the Rayalaseema area, sir, to वी वेंट टू understand? तिरुपति एंड वी वेंट टू विशाखापट्टनम, टू एरियाज वी Oh, वेंट। you have gone to Tirupati. Then Tirupati might be you might have gone some, you might have had some instance of watching some PMDS or pelletization there. Has it been done? Some demo or something? At that time, I think we didn't see the pelletization being done because वहाँ already crop लगे हुए थे, but maybe Okay, okay, हाँ fine. हम्म, Fine, sir. Yes, to answer your first question, pelletization, yeah doing the pelletization will take care of that, sir. Pelletization. Yes, हम्म। sir. तो उसका सर यही उत्तर कह रहे हैं कि एक बार ये प्रक्रिया सीड पेलेटाइजेशन की इसीलिए है कि मान लीजिए आपकी बारिश आगे पीछे होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करके निश्चिंत हो सकते हैं, और जब भी बारिश होगी वो निकल के आएगा, क्योंकि सीड एक अलग तरीके के कोट में है जो उसको हमेशा न्यूट्रिशन दे रहा है, तो वो मरेगा नहीं, वो आगे भी जिंदा रहेगा। दूसरा सवाल था sowing during the summer if they are suffering for drinking water. Mm, okay, which farmer should be targeted, marginal or large farmers? The question is किस तरह के किसान को टारगेट करें, बड़े किसान या छोटे किसान? तो Sir, basically, the thing हम्म, is all our efforts. yeah, Actually, I'm sorry that I didn't talk about our target. All yes, our efforts directed at small and marginal farmers, all of those hmm, beyond the 2.5 acre hmm, segment. Because hmm, hmm, you pretty well know we are working with SHGs and VO, volunteer yes, organizations. yes, So all of the people under the umbrella of VO and SHG are 100% under the 2.53 acres only. So all yes, of our efforts are directed towards this segment only because they are the most sensitive people. They are most vulnerable to the climate hmm, change. All the hmm. problems are because of the bigger landlords. Correct, But the correct, but the hard fact of the day is they are having to face the music. So we want hmm, that their livelihoods are enhanced. hmm, Their hmm. way of doing agriculture is bettered. So our targets are small and marginal farmers. यस Yes, sir. यस। सो वही सर का भी वही कहना है कि फोकस शुरुआत से और अभी भी छोटे और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, सीमांत किसान ही हैं हमारे, और उन्हीं के साथ करने में ज्यादा पोटेंशियल भी है, जो मैं समझ पाया हूँ कि उनके साथ करने में काफी पॉसिबिलिटीज हैं, और उनकी ही इनकम अपने को एनहांस करने की कोशिश करनी है, उन्हीं के न्यूट्रिशनल उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, इसलिए ये टेक्निक बेस्ट सूटेड है ऐसे किसानों के लिए। फिर सर अनदर क्वेश्चन वाज व्हाट इज द इकोनॉमिक्स एंड हाउ फार्मर्स अरेंज इन्वेस्टमेंट इन बाइंग 30 सीड्स फॉर पीएमडीएस? Yeah, this question is very good. Actually, based on the kind of different seed mixes, our people are standardized in different districts. We, for the past 2 years, have started promoting this PMDS with this PMDS seed kit. ओके We have standardized seed kits in the different geographies, ओके and one standard seed kit contains these different crop seeds between 25 to 30, 32 in about 10 to 12 kg. So वन किट this हैज we are 10 to selling 12 kgs of seeds? 10 to 12 kg is the total quantity. All the 30, 32 will be only 10 to 12 kg. ओके And ओके ओके this will be a cost of around 800 to 1000. It varies. It varies from district to district. There is no subsidy, believe me. Not a single pie we are giving on subsidy. It's all directly cost to cost basis. We are promoting it through VOs. We got tie-ups with the VOs. So through VOs internal funds only, SHG's funding only, the active VOs they support this promotion of PMDS by lending to the active ओके farmers who are part of these SHGs. And initially, once they give some amount, this amount after sales of these kits is reimbursed and they take a second loan. So that's how they plan effectively prior to the onset of season to ensure that all the prospective willing farmers get one kit.
Okay. There are certain areas in tribal areas, in certain areas like Anantapur, where the farmers have, because they have these dry, semi-arid patches, most of the seeds, they are available with them. They either Okay. barter between farmers, or from the farmers only, they ensure that they cater to the requirement of farmers in different other villages. This Okay. is how we are Okay. promoting right now. ओके ओके। तो एक चीज सर ने बताई कि ये एपीसीएनएफ के अनुभव के आधार पे है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में 2 साल से ये जो सीड किट है इसको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग परिवेश के हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया है। तो अनंतपुर के लिए हो सकता है कोई और सीड के कॉम्बिनेशंस हो, और मान लीजिए कोई और डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए। अब ये टोटल कॉस्ट जो सर बोल रहे हैं कि एक सीड किट जिसमें 30 से 32 प्रकार के सीड्स हैं, वो करीबन 800 से 1000 रुपए तक एक किट आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बोली कि इसमें कोई सब्सिडाइज्ड कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट किसान को ही देनी पड़ रही है। वो किसान को कैसे देनी पड़ रही है, उसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एसएचजीज जो हैं, वो मदद कर रहे हैं किसान को लोन दे करके ये बीज सीड किट लेने के लिए। और जब उनकी फसलों की सेलिंग हो जाती है, उससे जो कमाई होती है उससे वो लोन वापस करते हैं और फिर अगले सीड किट को लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम, एक चक्र बना दिया है कि एक किसान को कहाँ जाना है, ये सीड कैसे लेनी है, कैसे उपलब्ध करानी है, लेकिन तब भी 30 से 32 प्रकार की वैरायटी के सीड्स 800 से 1000 रुपए में आ रही हैं। और उसमें से कई सारे सीड होंगे, हो सकता है जो घर में मिल जाए, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो सरसों हो। कई सारी चीजें आपको अपने घर पे ज्यादातर मिल भी जाती हैं, लेकिन बाकी जो बाहर है उसका एक अलग से कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज This सर is व्हाई। I just want to share my screen for this प्लीज question प्लीज to प्लीज support प्लीज my statement. See, these are प्लीज the different districts, sir. See, Srikakulam, Parvatipuri, Manyam, all these are districts. I hope my यस screen is visible, sir. विजिबल सर, विजिबल। See, Yes, for yes, Vijay. instance, here we have got around 11.02 kg. The cost is 1252 rupees, and we have got 24 varieties. That was in ओके 2024. Now they said we will just increase the seed variety to one more. They said 25 seeds, and the quantity is 11.92 kg. So this is how, based on their field experiences as to what actually happens in their field, and the observations from the farmers, from the cadre who are actually promoting it, they tend to adjust their PMDS seed mix, which is part of the kit, accordingly. So this is the ओके entire. We have got 26 districts. So it varies from district to district, year to year. ओके ओके सर, Super. related to this, there is a question: what is an average cost per acre for PMDS, including seeds and pelletization? सब कुछ अगर if you have any approximate idea on that. Average cost would be something like this. I was telling you, 1,000 to 1,200. That's it. In That's a seed pelletization, cost, including yeah, and seeds the pelletization and all also maximum we can have 2,000 more. At the, say 3,000, 3,500. You can have pelletization plus the seeds per acre cost. per Okay, acre. Yeah, okay, per acre. okay, okay, Max. okay. Next question is Prakash ji, are you there, sir? Prakash? Yes, sir. Prakash Garu. Thank you so much, Gopi sir. No. This is not for thanks, because Mr. Pramel and Manas were asking for you for Yeah, anchoring the session. Just now I was sorry in between. I went for myself and Murli sir joined in GIZ second phase discussions. So Yeah, fine. Go ahead. I opened that now. Now it is okay. You can continue here for some time. Yeah. So, Yeah, please. Prakash sir, we are just taking up some questions which have come up in the chat. And one by one, we are going through those questions, and then maybe you can also share some of the insights. So, Yeah, please go ahead, Manas ji. Please go ahead. yeah. सर, एक क्वेश्चन ये है: व्हाई नॉट फार्मर्स आल्सो adopt soil solarization every 3 year deep plowing adopt for pre-monsoon soil pest management? Sir, soil solarization is something we are 100% averse to. You don't, as part of natural farming,
We are saying that keeping soil covered with Yes, living yes, is the solution. Deep yes. ploughing, we are completely anti to deep ploughing. Deep ploughing is still continuing in our textbooks, is it not? Yeah. All agriculture based जो भी है, there must be several doctors, scientists, people working for the private sector and all in this particular call. Maybe someone also seeing it live stream. We are anti to deep ploughing. We don't want deep ploughing to happen. That is not part of natural farming per se. I don't want to talk more than that. या या मेक सेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में पीएम मतलब जिस तरह की प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं उसमें सॉइल सोलराइजेशन से थोड़ा मतलब दूर ही है, हमें वो ये नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं है, ऐसा सर का कहना है। If farmers have irrigation facility monsoon sowing helpful, but not irrigated summer season, how this technique adopt? Not irrigated summer season, how this? Okay, what are the crop seeds which are being used excessively nowadays in AP? Wherever there are facilities for irrigation, you can go in the regular route without, there is no need of pelletization. Yeah. Just to ensure that we don't miss the actual timing of seed sowing and all, to ensure that we catch up, the seed catch up, the seed gets viable with the initial state of germinability only. Whenever there is incidence of rains, we are saying pelletization. So mastering the technique of pelletization also is very important activity over here. Learning the skill of pelletization. It's not just because, see, while doing the activity in the gunny, you must actually understand and appreciate as to whether that round is completed, whether it is sufficient, whether the real pellet has been achieved or not. All that comes over a period of time. So we are all learning from our CTIO, our DPM Ananthapuram. So time and again, we keep taking the examples of our Ananthapuram person, because he is expert in that. He has promoted all this. He has got a separate way of training people. Yeah. Yeah. The pelletization says it all. It is a crux. ओके ओके, सो ये पेलेटाइजेशन अगर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि कैसे करना है क्या करना है, तो उससे बहुत सारे सवाल, और उसमें एक सवाल ये भी है सर कि पेलेटाइजेशन सिर्फ क्या जो गोल बीज हैं, जो राउंड बीजेस हैं, सीड्स हैं, उनके लिए पॉसिबल है, और इज इट पॉसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सीड? सो थिंक इट इज पॉसिबल, इट शुड बी पॉसिबल फॉर, इट इज बिकमिंग No, pelletization can be done for all kinds of seeds, any seed. Can it be possible crops like turmeric and ginger? Can it be possible for crops like turmeric and ginger? मतलब मुझे ये नहीं पता है कि are they asking that turmeric and ginger are the main crops and then how PMDS can be incorporated into that? But just the question is कि can it be possible for crops like turmeric and ginger? Turmeric and ginger for pelletization, is it? No, मतलब for this PMDS process. PMDS. ये नंदी जी का सवाल था। PMDS can be done. PMDS can be done. Yes. PMDS can be undertaken, sir. Even in those crops, it can be Okay. undertaken. Okay. Right. So then last question is how long it can wait till it receives rain? So वो पहले ही सर ने आंसर दिया था कि करीबन 4 से 6 महीने तक अगर आपने सीड पैलेट बना दिया है तो वो खराब नहीं होने वाला है। So हाँ, these were the major questions. यहाँ पर जितने लोग साथी हैं, yes sir. Yeah, please go on. Yeah, I'm just saying yes. Yeah. So मोस्ट ऑफ द जो भी यहाँ पर अपने साथी हैं, ये एक बेसिक, आज की वेबिनार एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीएमडीएस और पीएमडीएस से कैसे मिट्टी बदल रही है, पर्यावरण बदल रहा है, वहां के आसपास की जो फ्लोरा फौना है वो कैसे बदल रही है, उसको ध्यान में रख करके किया गया है। जो भी आज यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस पे, इस वेबिनार पे जो भी संस्था के लोग जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, वो अपना चैट बॉक्स पे नाम, नंबर, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसके ट्रायल्स करने में, खरीफ से पहले वो आज अपने संस्था का नाम, नंबर और स्टेट इस चैट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें। और
ये इसलिए मांगा जा रहा है कि इसके बाद में हम लोग एक फिजिकल वर्कशॉप की कोर ट्रेनिंग हो, क्योंकि वेबिनार में आपकी एक लिमिटेशन है, आप कुछ चीजें समझ पा सकते हैं, कुछ चीजें में थोड़ा सा कमी रह सकती है, लेकिन सामने फिजिकल ट्रेनिंग कैसे होगी, सीड पैलेट्स कैसे बन रहे होंगे, पीएमडीएस की प्लानिंग आपके क्षेत्र में क्या हो रही होगी, फसलें कौन सी हो सकती हैं, ये सब करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस खरीफ में, तो प्लीज अभी ये सारी डिटेल्स चैट में शेयर कर दीजिए। और आपके राज्य के जो स्टेट फैसिलिटेटर्स हैं एनसीएनएफ के, उनसे जरूर संपर्क कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए और उनको भी मैसेज डालिए कि हम इंटरेस्टेड हैं इसका ट्रायल करने में, एंड देन हम आगे जाते हुए इसकी प्लानिंग इफेक्टिवली करेंगे कि किसको कैसे आगे लेके जाना है। प्रमिल जी, आई विल हैंड इट ओवर टू यू नाउ। धन्यवाद, धन्यवाद गोपी जी और मानस। अ, जो सभी साथी जो जुड़े हैं वो अपने अपने राज्य के जो व्हाट्सएप ग्रुप है एनसीएनएफ का, वहाँ पर भी अपनी डिटेल्स साझा कर सकते हैं अपना आपका पीएमडीएस को लेकर, और आप अपनी संस्था में कैसे कार्य योजना बनाएं और कैसे कुछ प्रदर्शन के रूप में इस मानसून पूर्व आप अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो आप साझा करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारे जो स्टेट फैसिलिटेटर हैं वो आपके साथ में समन्वय करके, और साथ में आरवाईएसएस के जो एनआरओ साथी, जो समन्वयक साथी हैं राज्य, हर राज्य में हैं उनके साथी, तो मिलके हम लोग अगर जरूरत हुई तो हम लोग क्विकली एक फिजिकल मीटिंग भी प्लान कर सकते हैं, जिससे कि यह एक जो आज जो जलवायु अनुकूलन के लिए, जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें जलवायु अनुकूलन के लिए जो सबसे बेहतरीन एक मृदा स्वास्थ्य और कृषक कृषक की आमदनी बढ़ाने की जो पद्धति है, तो छोटे कृषक के लिए जो गोपी जी ने कहा है स्पेशली, और एक पूरी जैव विविधता कैसे बिल्ड हो, और पूरा खेत का एक तरह से पुनः अ, निर्माण कैसे हो, एक तरह से रिजनरेशन कैसे हो पूरे पूरे खेत का, उसको लेकर है। तो अब हमारे साथ में प्रकाश जी हैं, और मैं उन साथियों को आमंत्रित करूंगा, कोई भी साथी जो जिनके सवाल हैं वो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रकाश जी उनका उत्तर भी हिंदी में दे सकते हैं, जो लिखने में असमर्थ थे, लिख नहीं पाए, और किसी को पीएमडीएस को लेकर अगर कोई सवाल है आपका, तो आप अपना सवाल करें। हमारे साथ में आरवाईएसएस के बहुत ही वरिष्ठ साथी प्रकाश राव जी हैं, तो वो उसके उत्तर आपको दे पाएंगे। प्रमिल जी सही बताया, सभी का नमस्कार। मेरा सुझाव यही था, अभी गोपी साहब क्या क्या आपका कॉन्सेप्ट सीडिंग का बारे में परिचय दिया, ओरिएंटेशन दिया था, उसका ध्यान दे दो। आप लोग ये क्रॉप आपका एरिया के अनुसार, क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, पानी का इलाका है, सुविधा है, नहीं तो पैलेटाइजेशन का माध्यम से जाना जरूरी है, ड्राई एरिया है, तो उसी हिसाब से आपका सीड मिक्स क्या होना, उनके लिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए क्या प्रक्रिया है, अपना एनजीओ का पास सेंट्रली प्रोक्योरमेंट का अपना का व्यवस्था सुविधा है क्या, नहीं तो स्वयं सहायता समूह को लोग उनका जागृति करवा के उनका एमसीपी का माध्यम से, माइक्रो क्रेडिट प्लान के माध्यम से इकट्ठा करेंगे क्या, नहीं तो कोई सीएसआर का रूप में कोई भी लोकल कंपनीज का है, कोई पात्रता लेने वाला कोई है तो उन लोगों का इन्वॉल्व करेंगे क्या। इसी हिसाब से आप लोग देख के आपका सवाल ध्यान में रखकर ये पूछने तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पहले प्रयास है ना। वास्तव में प्रमिल जी, माई सेल्फ एंड गोपी साहब, हम तीनों बहुत विस्तार करके चर्चा किया था। पहले चरण विजय कुमार साहब का ये इंट्रोड्यूस करे तो लाने तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, नहीं तो क्लैरिटी नहीं हो सकता है। प्रथम स्थिति में अपना लेवल पे ये करने के बाद, एक प्रयास होने के बाद, जरूरत है तो एक हफ्ते के बाद, नहीं तो 10 दिन के बाद फॉलो अप और एक वेबिनार ऐसा, नहीं तो स्टेट वाइज ऐसा भी फोकस भी कर सकता है। हम तो तय करेंगे, प्रमिल जी, उनका टीम, मानस, हम सभी लोग मिलकर के हम जरूरत के अनुसार स्टेट वाइज का जरूरत है तो स्टेट वाइज करेंगे, जोन वाइज का है तो जोन वाइज करेंगे। जैसा ऐसा आप मान ले तो आप ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया, हमको केवल 2 घंटा का समय है। बहुत विस्तार करके गोपी साहब को बहुत अनुभव, लगभग 7 साल का अनुभव, पर्टिकुलरली 5 साल का पीएमडीएस का अनुभव आपका सामने रखा है।
अभी सोचने में कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत सारे सवाल उठने के संभव है, लेकिन सारे सवाल का अभी जवाब देने के लिए सही मंच नहीं है अभी। मेरा हल से कृपया मैं निवेदन कर रहा है सभी लोगों का, ध्यान में रखकर ये कॉन्सेप्ट का ये सीडिंग करने के लिए प्रयास करो, शुरू कर दो। फर्स्ट डायलॉग यू स्टार्ट डायलॉग विथ योर कम्युनिटी, then you come with that. Still if you are having some problems, we will have our group, WhatsApp ग्रुप में हम चर्चा कर सकते हैं। मैं गोपी साहब का, श्रीनिवास साहब का, मैं सभी लोगों का नंबर भी उनका जुड़वा कर लगातार आपका सहायता देने के लिए हम प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में प्रमिल जी, इस हिसाब से जाने तो अच्छा है, जरूरत है तो और एक हफ्ते का बाद और एक फॉलोअप मीटिंग का हम करेंगे। बीच में व्हाट्सएप का माध्यम से भी हम सुधार कर सकते हैं उन लोगों का सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक सिर्फ एक साथी ने हाथ हैंड रेज किया है, इनका इनका सुन लेते हैं अगर इनका कोई हाँ, सवाल। ये क्या सुनिए, रमेश चंद्र, बताइए। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल प्रकाश जी से। हाँ। हाँ। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम रमेश, आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम CYST, सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट, ओडिशा। So basically, CYST working the adjacent districts of Andhra Pradesh, such as Parvatipuram and Parvatipuram and Srikakulam district. So yeah, so therefore we are actually committed to do this natural farming in particular the adjacent district. Can you available this seed mini kit? What type of mini kit you are the provided in the Parvatipuram district? Can that type of seeds available for our farmers? Our farmers can procure. Yeah, Ramesh No ji, issue, sir. genuine. Your sawal is very genuine. Definitely, you have a dialogue with your community, your partners, or progressive farmers. You make up the seed mix accordingly. We in between, I will provide Parvatipuram, Srikakulam, or nearby district, adjacent districts pack up or pack. What is our PMDS kit? That detail I'll share with you. If you are okay with that kit, 32 varieties, 30 varieties, or something like that. If you are okay with that kit, we will definitely, you give your intent. Accordingly, I will coordinate with the respective DPMs and provide timely. I will provide the entire kits to you, deliver the things. Thank you, sir. Thank you. Thank you. First, but my request is, Ramesh ji, first you have a dialogue with your community. Yes. Yes, 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 yes. We will plan with our community. Then we will reach to you. In between, I will share the details. कंट्रोल का बता ही नहीं रहे, कंट्रोल का क्या है इनके पास? सॉरी, कपूर सिंह जी, कोई सवाल पूछ रहे हैं साथी? सर मेरा सवाल है। हेलो, हाँ पूछिए, कपूर सिंह जी पूछिए। जी सर जी नमस्कार, मैं कपूर सिंह चौहान, समर्थन संस्था पन्ना, MP से हूँ। और मेरा सर सवाल ये था कि जो ज्यादा हमारा ड्राई एरिया है, वर्षा आधार पूरी खेती होती है, लैंड की बात करें तो वो भी सैंडी है, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि हम ट्रेन करवा देते हैं तो बीट की बहुत बड़ी समस्या आती है। उसके लिए सर क्या हम ऐसा कोई हमारा ऑर्गेनिक है कि जिससे हम कंट्रोल कर सकें? Yeah, Singh ji, you'll do one thing. First, once again, I'm requesting Pramil ji and Manas and all, you please make out how many districts or how many states are having a dry area. For them, pelletization program that we will introduce. For that, we will have exclusive training program, a real demo program by our experts to the concerned all identified zones. That is one aspect. Immediately, that we have to finalize. The second thing, I will request even Rajasthan sandy soil is there. There also we have introduced PMDS thing. I will request the concerned zone district project manager as well as the local champion farmers. They will also convey the message, their experience in local language in Hindi during this session. So now I am requesting Pramil ji to finalize the dates and how many districts, how many states are fall into that segment. बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंह साहब, ये जो आप बता रहे हैं पन्ना है बुंदेलखंड रीजन की समस्या,
हम लोग सब लोग अवगत हैं, और जो प्रकाश सर जो सजेस्ट कर रहे हैं, सभी जो हमारे साथी हैं वो अपने राज्य के जो ग्रुप है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपनी मनसा, अपना प्लान अपना जाहिर कर दें। हम लोग फिर एक प्रशिक्षण या एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है, इस पूरे पीएमडीएस को करने के लिए इसी सीजन में। ओके सर। तो इसके अलावा किसी और साथी का प्रमिल कोई प्रमिल सवाल? जी 1 मिनट, गोपी साहब का हाँ, बार बार उनका विजय कुमार साहब का अभी मीटिंग है, तो थोड़ा अच्छा अच्छा। आपका तरफ से थोड़ा गोपी साहब का बारे में तो हाँ, Sir, actually, if you permit me, I'll एक just मिनट, गोपी take साहब leave को of all फोटो, of सब लोग you. अपना अपना जस्ट गोपी सर 1 मिनट, प्रमिल Yeah, साहब yeah. 1 मिनट, एक आप लोग सब लोग वीडियो अपना ऑन कर लें, तो गोपी सर के साथ एक फोटो ले लेते हैं हम लोग। आदित्य, यू आर रेडी टू क्लिक फोटो? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज ऑन योर वीडियो। గోపి సార్ కొంచెం మీరు కొంచెం తలకి ఓకే ఎస్ प्लीज ऑन योर वीडियो। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी साथी। मेरा एनआरओ टीम पूरा बैठा है इधर, श्रीनिवास सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपकी एनआरओ टीम हमेशा आपके साथ रहती है। बोल तो अनम्यूट क्यों दिखा रहे गोपी, आदित्य, हो गया फोटो? दिक्कत आ रही है, उधर से आ रही है। कोई दूसरा ट्राई कर रहा हैं? सर वीडियो नहीं रहा अभी, यहाँ अनम्यूट किए वहां पे। Right, sir. Thank you very much. Thank ओके, you very थैंक यू much. वेरी See मच you गोपी सर। sometime very आपका shortly. आप वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू in such simple manner you shared your vast experience on PMDS, and Actually, this it's a is in the responsibility, calendar. sir. Actually, it is so nice of you having said it. It's our responsibility to ensure that everybody follows the same path and we create Yes, a better planet for all of us. we are in NCNF, all partners are committed to this, to create this moment, learning from the advices, Excellent. right? So हम लोग और भी बाद में आपसे संपर्क करेंगे। और अभी प्रकाश जी और हम लोग ने एक पूरा एक प्लान भी बना रहे हैं राज्यवार, तो उसमें भी जब भी आपकी जरूरत होगी तो हम अवश्य आपसे संपर्क करेंगे। और आपका बहुत बहुत Fine. धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे सभी साथियों को आपने पीएमडीएस की बहुमूल्य जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, ओके, sir. Manas ji, Pramil ji, and all others in Thank you, the sir. call. Thank you so much, sir. Especially Prakash, he has given me the opportunity to interact with all of you. No Thank you sir, so no much. sir, I'm very so thankful to you sir. We were very lucky, all states having you here, because you are having a very rich knowledge and vast experience in this field. You are the right person to guide us. Thank you so much, sir, for your time, and because I know very well you are so busy with various tasks. Sir, I'm telling, sir, Gopigar is involved in various other aspects also. He is technically supporting the entire project. So thank you so much, sir, once again, on behalf of the entire NCNF family. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you very much. थैंक यू, Bye वेरी bye. साइंटिफिक मैनर, वेरी थैंक Bye यू bye, साइंटिफिक। सर, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साथियों, अब हम लोग आज की वेबिनार, Pramil ji, may I take leave? अच्छा कुछ, आप कुछ, या यू आर वांट टू टेक लीव? हम आपको और मुरली सर ने शुरुआत की आज की He's busy with the APF meeting. वेबिनार को लेकर। और मुरली सर जो है एक बहुत ही वरिष्ठ हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने, आप सब जानते हैं कि एनआरएलएम हो या आरवाईएसएस हो, इसका जो प्राकृतिक खेती का पूरा जो मुहिम है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। विजय कुमार साहब के बाद में प्रकाश जी जो पूरे भारत में आरवाईएसएस का जो एक एनआरओ का कार्य देखते हैं, आप आए हमारे साथ में इतने सारे सभी संस्थाओं के वरिष्ठ साथी। और मैं देख रहा था उड़ीसा से नंदी जी हूँ, या हमारे अलग अलग स्वप्ना जी हों, अलग अलग बड़ी मतलब जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, गुजरात राज्य से, राजस्थान राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से, नॉर्थ ईस्ट से, सभी मध्य प्रदेश से, सभी संस्था के कार्यकर्ता, संस्था प्रमुख लोग जुड़े। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एनसीएनएफ की तरफ से। और आप लोगों ने अपना जो संपर्क, जो कांटेक्ट नंबर आपने यहाँ पर शेयर किया है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी जो मंशा है पीएमडीएस को लेकर, आपका जो प्लान है पीएमडीएस को लेकर, वो वहां पर साझा कर दें। हम लोग वहां से पिकअप करेंगे, हमारे
जो भी संस्थाओं का जो इंटरेस्ट है पीएमडीएस को लेकर, और हमारे स्टेट फैसिलिटेटर तुरंत उसके ऊपर फिर आपके साथ में मिलकर एक प्लान बनाएंगे, हमारी जो आरवाईएसएस की एनआरओ टीम है उसके साथ में मिलकर, कि कैसे हम यह एक तकनीकी रूप से एक बिल्कुल ठीक डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन पीएमडीएस का आपके क्षेत्र में लगा पाए। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रमिल जी, एक हाँ चीज था बस ये, जितने भी लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, चैट पे मैंने ये एक लिंक भेजा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ अभी हम पीएमडीएस को फोकस रखते हुए ये बनाया गया है। तो जितने भी साथी हैं इस लिंक पे क्लिक करके इस वाले ग्रुप में जुड़ जाएं, फिर हम वहां पर नॉलेज मटेरियल शेयरिंग का भी काम चालू कर देंगे। ओके प्रमिल जी, मानस एंड ऑल वरिष्ठ थैंक यू सर। बहुत राज्यों से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर। ध्यान से आप लोग सुना है। अब मैं आशा कर रहा है ये आगे बढ़ेगा ये कार्यक्रम। आप सभी का शुभकामनाएं मेरे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू सर। ऑल। धन्यवाद, धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद। हमारे मित्र लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हैं, अंशु हैं, बहुत सारे साथी लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। यूट्यूब से भी प्रमिल भाई जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। हाँ, सब जो साथी थैंक यू यूट्यूब सर। पर जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेचुरल फार्मिंग के अपने जो मूवमेंट है उसको हम और मजबूत करेंगे पीएमडीएस जैसी तकनीकी को अपने क्षेत्र में अपनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। थैंक यू, थैंक यू कपूर जी, थैंक यू। Aditya bhai, you can stop the live stream.